Assalamu alaikum to all of you. I welcome you all here. First of all, let me take this opportunity to facilitate the people on the occasion of International Women's Day that luckily coincides with the foundation day of our party. The recent Srinagar acid attack and many such reported and unreported incidents, besides the unending day-to-day based problems in the lives of our women, must be enough for all of us to hang our heads in shame. Nevertheless, this is the day we all should once again rise to the occasion and pledge to strive to give proper respect to all the women around us. Women are the catalyst of positive change and progress in our society. They are the epitome of courage and strength. And I sincerely wish all the women in this world, especially in Jammu and Kashmir, a happy, prosperous, and dignified life. Coming to our party's foundation day. On March 2020, a political moment was born in the backdrop of traditional political gimmickry that had eaten into vitals of our society. We came to the forefront to demand an inevitable change necessitated by the old and fresh political developments happening in the region. March 8, 2020 was a historical moment in J&K's political history when the doors were opened for common citizens who had been witness to a perpetual decline in political value system and apparatus of government for decades. With an issue-based developmental agenda and putting forth a model of truthful politics began the journey of a new political platform called Jammu and Kashmir Apni Party. People from all fields and regions and sub-regions of J&K started becoming part of a new political discourse, and this is how we stand in front of you today as a viable political alternative to reckon with. No barriers have been put to entry of men and women, young and old, laborers or employers that distinguish this party from the rest of the traditional political outfits in J&K, whose hallmark has been treachery, rhetoric, political opportunism, mudslinging, and the lust for power. From days since Apni Party's inception, we have never claimed or promised anything that is not achievable in terms of the prevailing situation. With no power in our hands, we only pledge to deliver whatever was within the realms of social, political, and economic possibilities. Today, I want to reiterate that on August 5, 2019, people of J&K, including Ladakh, were robbed of their sense of identity, historical and cultural bonds. We have already declared that day as a black day in J&K's political history, not only because our special status was snatched, but the people of J&K were completely disempowered and handed over to an unbridled bureaucratic regime who till now are ruling the roost. Friends, you have seen us through these 2 years. I would welcome all of you to even quote one instance where you think that we did not go by our stated position of truthfulness. Whether it is speaking against the policies of the present-day government in J&K, whether it is speaking about the problems of our youth, whether it is about sidelining of our local bureaucracy, whether it is the loot of our natural resources, sand, bajri, or water resources, or whether it is about the business of land which has been opened in floodgates to outsiders through the means of government's so-called industrial policy, where we do not find any mention how to handle the rising unemployment of educated people, or whether it is frustrating our youth by cancelling advertisements of Public Service Commission, JK, SSRB, or police recruitments. We are open to questions from you, but would only like to make one commitment to you. This is a party which we think
would be the future for most of the youth of the Jammu and Kashmir, because we are those people who do not belong to the elite section of the political class. We are commoners like you all, and we understand the pain of a commoner. ये तो एक पहलू है, इन्होंने क्या नहीं ख़त्म किया हमारा, इन्होंने हर एक चीज़ ख़त्म की। इस सुनिए, आप सुनिए, इस इमारत को आप नए सिरे से एक एक ईंट लगा के तामीर करना है, और मैं इसीलिए क्लेम करता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद जमात है जो जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को, इंशाल्लाह लद्दाख को भी इकट्ठे नीचे से नई तरह से तामीर करेगा, चाहे वुमेन कमीशन की बात हो, चाहे बाकी चीज़ों की बात हो। अल्ताफ साहब, अगर अपनी पार्टी के सरबराह से पूछा जाए कि 3 अल्फाज में कहिए कि जम्मू कश्मीर के, स्पेशली कश्मीर वैली के यूथ के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? तीन अल्फाज में अगर आप जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए अल्ताफ बुखारी से कुछ पूछेंगे तो आप सबसे बड़ी ज़्यादती तो उस यूथ के साथ कर रहे हैं जो यूथ इस वक्त सफ़र कर रहा है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, मैं उनको एक आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अल्ताफ बुखारी वाहिद वो शख्स इस पॉलिटिकल एरेना में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है जो सिफर से जिसने शुरू किया हो और ख़ुद कुछ बनाया हो। उसे मालूम है सिफर से कैसे बनाते हैं और एम्प्लॉई नहीं एम्प्लॉयर कैसे बनते हैं। अल्लाह के फजल से खुद बैठूँगा, लोगों ने अगर हम पे एतमाद किया, खुद बैठूँगा इन नौजवानों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ और वो स्कीमें लाऊंगा जिनसे वो खाली एम्प्लॉयमेंट ही नहीं पाए, एम्प्लॉयर भी बने। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सच बात है। जो ये हादसा अभी हुआ हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, इसकी जितनी निंदा की जाए, और कभी तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कौन मरता है, हम मरते हैं, इसमें कोई बाहर से आके नहीं मरता है। हमारी बच्ची मरी, हमारा बुजुर्ग मरा, मारने वाला भी हम में से और मरने वाला भी हम, मरने वाले भी हम। कब तक चुप बैठेंगे इस चीज़ को लेकर? सोल्यूशन लाइज विद अस, वी हैव टू सी। ये जो अनासर हम में हैं जो ये ऐसी कार्रवाई करते हैं, उन्हें हमें वी विल हैव टू टेल देम दैट दिस इज़ नाउ नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे हम दिल्ली को कहते हैं दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बहुत आप लोगों ने हमारे साथ गदर किया। ये बिहार यूपी से ला के काफ़ी गदर हुआ। इसी तरह से जो हम में से ये काम करते हैं उनको भी हमें कहना पड़ेगा। कब तक हम अपनी बच्चियों का बलिदान ऐसे देंगे? जनाजा तो हम बहुत बड़ा निकालते हैं, लेकिन क्या हम उस बच्ची को वापस दे सकते हैं? क्या हम उसके ड्रीम्स को वापस दे सकते हैं? क्या हम उस बुजुर्ग को वापस दे सकते हैं? 1,30,00,000 people, they spend 2 days here. How can they do justice with us? So my first objection is they have not covered the ground. Unless they hear the people, the elected representatives at the ground level, at least 2 days, 3 days in every district, how could they do justice? It is not that they have to draw lines on a map. Then there was no need. Then they could have put any artist, an artist could draw much beautiful lines. Graphics can be done. Altaf साहब, PAGD में 2 पार्टियां, अहम पार्टियां एनसी और PDP, वो कहते हैं कि 370 या बाकी ज़मीन के हुकूक को लेकर असेंबली में जब हम जाएंगे तो कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं। आपने अभी कहा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब ये कि 370 या दीगर ऐसी चीज़ों पे इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए साहब, आप सब लोग जानते हैं, अब कब तक ये झूठ कहेंगे? ये असेंबली खाली आपके रोज़मर्रा मसाइल, आज जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है वो सुनवाई कल जब आपके अपने नुमाइंदे होंगे वो सुनवाई होगी, आपकी डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस होगा। बाकी कोई पॉलिटिकल जिसकी हमारी पहचान से, इवन आवर स्टेटहुड कैन नॉट बी restored by our assembly. It has to be restored by parliament. It has to be restored by union government. It cannot be done by us. ये धोखा दे रही है। यही तो हम कहते हैं कि धोखे पे मुबनी ये लोगों को धोखा देते हैं। इससे इन्होंने नहीं ऑटोनॉमी पास की, आपको याद है क्या? फिर मिली ऑटोनॉमी?
क्यों ये धोखा था? इनको मालूम था, इन्होंने तो इख्तियार नहीं छोड़ा। चलो अगर ये एहतिजाज में इख्तियार ही छोड़ते, हम कहते ये सिंसियर थे। तो मैं लोगों से बोधमाना तौर ये कहना चाहता हूँ, साहब ये असेंबली के इलेक्शन 370 और 35A के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको सबको याद होगा, इन्होंने अभी जब DDC के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस लाएंगे। क्या ये लाए? कब तक ये हमें झूठ बोलेंगे? हम देखिए, हम PAGD के खिलाफ नहीं हैं, हम PAGD के झूठ के खिलाफ हैं। और अगर वो हमसे डरते हैं, वो हमसे हमारी शक्लों से नहीं डरते हैं, वो हमारे सच से डरते हैं। क्यों? हम सच बोलते हैं। कब तक ये हमें झूठ बोलेंगे? हम देखिए, हम PAGD के खिलाफ नहीं हैं, हम PAGD के झूठ के खिलाफ हैं। और अगर वो हमसे डरते हैं, वो हमसे हमारी शक्लों से नहीं डरते हैं, वो हमारे सच से डरते हैं। क्यों? हम सच बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हालिया इकदाम डेवलपमेंट्स में, क्या आपको लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट संजीदा है अब यहाँ पे जम्मू बाहर करने? देखिए, वो संजीदा है या नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग की ज़रूरत है कि उनकी एक अवामी सरकार हो। उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, उनकी संजीदगी होनी या ना होनी शायद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं कह सकता है। वो तो उनके दिलों में क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लोगों की ज़रूरत है कि उनको एक अपनी चुनी हुई सरकार मिले, ताकि वो कहीं जाके अपना दाद बिदाद सुनाएं। आज कोई दाद बिदाद सुनता नहीं है। आज उनको ये मालूम नहीं है कि आप देखिए, डिलिमिटेशन में अनंतनाग को राजौरी पुंछ से जोड़ा गया है। अगर उसमें कोई यहाँ का लोकल अफसर होता या लोकल की इनपुट ली होती तो उनको कोई बताता 6 महीने तो मुगल रोड बंद होता है। खुदा ना करे अगर MP वहाँ से हो या यहाँ से हो तो 6 महीने क्या उसको इंतज़ार करना है लोगों को उससे मिलने के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो करना में किया गया है, जिस तरह से किया गया, तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे ये बताएं, अगर ये हतमी कमीशन की जो ये हतमी रिपोर्ट मानी जाए और नई दिल्ली ने यहाँ पर इनिशिएट किया कि इलेक्शन होने हैं, क्या जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी इसको हतमी तस्वीर करके इलेक्शन में हिस्सा लेगी? देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। ये हतमी है या नहीं है, ये तो जिस वक्त एक ड्राफ्ट सामने आएगा उसमें मुझे उम्मीद है और मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि वो जोक दर जोक इसमें अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें जो उनको लगता है, और हमारी जमात भी ज़रूर करेगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हमें पहले सबको ऑब्जेक्शंस करनी चाहिए। जम्मू के लोग भी करेंगे, कश्मीर के लोग भी करेंगे, सियासी जमातें भी करेंगी, और उसके बाद आप एक जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं। कितनी ही बुरी वो हो, फिर भी वो इस ब्यूरोक्रेटिक रेजिम से बहुत अच्छी होगी। क्यों? उसमें एक लोकल फैक्टर होगा जिन पे लोगों ने अपना एतमाद जताया होगा। इसलिए उस लिहाज से तो उस अमल के थ्रू जाना ही पड़ेगा। सर, VDGs को अभी रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि उस इन्फ्लेशन या कम्युनल राइट्स बढ़ सकते हैं? देखिए, कम्युनल राइट्स करवाने की कोशिश हमेशा यहाँ रही, बिकॉज वी आर दोज पीपल who do not belong to the elite section of the political class. We are commoners like you all, and we understand the pain of a commoner. Thank you. Sir, how do you react to the announcement of the Union Home Minister about the elections in Jammu and Kashmir, while the Delimitation Commission is yet to submit its final recommendation? Talking about the delimitation, as we all have heard since it has been happening for last 72 years, many delimitations have taken place, but they are all there for empowering the people. Unfortunately, this Delimitation Commission whole exercise was done with a view how to disempower the people of Jammu and Kashmir. We have rejected its draft. We were not members in any of their committees. Unfortunately, only people in power today are either National Conference's 3 MPs from Kashmir or BJP's 2 MPs from Jammu.
after the Delimitation Commission, the proposal is to be thrown open for the public, where the political parties even can submit their observations or their objections. What are the major objections, the rejections from your side, from your party? Look, whatever our objections would definitely be put forward before the Delimitation Commission. My first objection, which I would like to take even before it is sent to public, is that did the Delimitation Commission really go to the public here? They came, visited us, not even like our tourists who visit us. They at least visit us for 7 days. A tourist visits 7 days to cover Kashmir, to see Kashmir. They had to decide about the future of our 1 crore and 30 lakh people. They spent 2 days here. How can they do justice with us? So my first objection is they have not covered the ground. Unless they hear the people, the elected representatives at the ground level, at least 2 days, 3 days in every district, how could they do justice? It is not that they have to draw lines on a map. Then there was no need. Then they could have put any artist, an artist could draw much beautiful lines.